Hello everyone, good afternoon, welcome to my channel. So in this lecture I am going to explain another important property of Laplace transformation, that is Laplace of integral. So make sure you know Laplace of different type of function, Laplace of cos it, Laplace of sin it, and different properties of Laplace transformation like your fast shifting property and effect of multiplication by t, effect of division by t. So without further delay, we'll start the lecture. My name is SR Pusti and you are watching my lovely channel Love You Science. So let's see. Laplace of integral क्या है देखो, f of t is a function, f of t is a function if Laplace of f of t is equal to fs or f bar s, then as per the theorem, then Laplace of integration of f of t limit from 0 to t, ये याद रखना, मतलब Laplace of integration of that function limit from 0 to t is equal to fs by s. ये fs क्या है? fs is the Laplace of this function. ठीक है, we'll take an example. We'll find out Laplace of integration from 0 to t cos 2t into dt. So I'm taking a small example. See, your function is what? Here ft is cos of 2t. So first you take Laplace of f of t. Laplace of f of t मतलब Laplace of cos 2t. Laplace of cos 2t क्या है? as by a square plus a square. a is 2, 2 square is 4. मतलब ये जो पार्ट आपका that is called fs. Okay, so Laplace of, here I'm writing Laplace of integration from 0 to t cos 2t into dt. ये complete part का आंसर क्या होगा? as per the definition it is fs by s. so fs क्या है? as by a square plus 4 and by s मतलब multiply करो 1 by s. s will be cancelled. So the answer is 1 by s square plus 4. ठीक है? So coming to next question, we will find Laplace of integration from 0 to t cos square t into dt. See, so our function is cos square t. First we'll write function f of t is cos square t. You know cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2. So here cos square t is 1 plus cos 2t by 2. So if you take Laplace of f of t, then Laplace of 1 plus cos 2t by 2. So here 2 was common, मतलब Laplace of 1 plus Laplace of cos 2t. ठीक है? So I can write here half Laplace of 1 is 1 by s and Laplace of cos 2t is s by s square plus 4. So ये जो part आपका, ये part that is called fs. But we will find out Laplace of this part, Laplace of integration of cos square t into dt, limit from 0 to t. So as per the definition, it is what? fs by s. So here fs is what? fs is 1 by 2 1 by s plus s by s square plus 4. ठीक है, by s मतलब by 2s, सॉरी by s का. So ये हो गया आपका फाइनल आंसर. ठीक है? So coming to next question. So Laplace of e to the power minus 3t cos square t into dt. See, here we are multiplying e to the power minus 3t to cos square t and limit is from 0 to t. So you have to find out Laplace of the entire function, मतलब integration from 0 to t. function क्या है? e to the power minus 3t cos square t into dt. मतलब here we can say our function is this one. Okay, so for that what we'll do, first we'll find out Laplace of cos square t. So Laplace of cos square t क्या है? Laplace of 1 plus cos 2t by 2. ठीक है, इसका Laplace क्या है? हाफ Laplace of 1 plus Laplace of cos 2t. ठीक है, so Laplace of 1 क्या है? 1 by s plus Laplace of cos 2t क्या है? s by s square plus 4. मतलब ये हो गया Laplace of cos square t. बट Laplace of क्या है? Laplace of
e to the power minus 3t, मतलब Laplace of e to the power minus 3t into cos square t क्या होगा? You know fast shifting theorem. As per the fast shifting theorem, again I repeat, as per the fast shifting theorem, if Laplace of f of t is f of s, then Laplace of e to the power at f of t is equal to f s minus a. Just you replace s minus a. ठीक है? Let me erase. So now we can write here a is here minus 3. So s minus of minus 3 मतलब plus 3. ये तो आंसर क्या हो जाएगा? हाफ 1 by s plus 3 plus s plus 3 by s plus 3 square plus 4. ये हो गया Laplace of e to the power minus 3t into cos square t. ठीक है? So as per the theorem, ये क्या है? Laplace of integration of this part, ये क्या हो जाएगा? मतलब ये आंसर इज fs by s. So this one is fs here. ये जो Laplace of this function, that is called fs. So your final answer is fs by s. Since we are taking Laplace of integration from 0 to t to that function with respect to t, then answer will be fs by s. So fs क्या है? 1 by 2 whole into 1 by s plus 3 plus s plus 3 by s plus 3 whole square plus 4 into क्या होगा? into 1 by s. ये हो गया आपका आंसर. Then you simplify it and get the answer. Okay, I hope you understood. Okay, next question. Laplace of t into cos square t. So here we'll apply effect of multiplication by t, that theorem. So first we take, so here our function is actually ft. Ft is, sorry, एक second. So here our function is t into cos square t. मतलब our function is t into cos square t. So our function ft is क्या है? t into cos square t. ठीक है? So Laplace of ft क्या है? Laplace of t into cos square t, which is fs. So we'll find out fs. So to solve, to find out Laplace of t into cos square t, first we find out Laplace of cos square t. Laplace of cos square t क्या है? Laplace of 1 plus cos 2t by क्या है? 2. मतलब Laplace of 1 plus Laplace of cos 2t. ठीक है? So हाँ, Laplace of 1 is 1 by s plus Laplace of cos 2 is s by s square plus 4. Okay, but we'll find out Laplace of क्या है? Laplace of t into cos square t. So here I am writing Laplace of t into cos square t. क्या होगा? As per the theorem, here you apply effect of multiplication. Effect of multiplication by t. So what is the answer? मतलब minus of d by ds of that function. ये मान लो कि fs है. So 1 by 2 1 by 2 1 by s plus s by s square plus 4. Are you getting my point? Forget about this question. First you find out Laplace of t into cos square t. याद है, अगर एक फंक्शन है, ये मान लो कि ft है, ठीक है? I have explained in my previous lecture effect of multiplication by t. अगर Laplace of f of t is fs, then Laplace of t into f of t is equal to minus of d by ds of fs, मतलब negative differentiation of fs. So here we got Laplace of cos square t is this one. If we take Laplace of t into cos square t, then we have to differentiate this function with respect to s and put a negative symbol. Okay, so if we integrate this parameter, this part, so minus half as common, मतलब d by ds of 1 by s plus d by ds of s by s square plus 4. ठीक है? So if you differentiate d by ds of 1 by s क्या है? देखो differentiation of 1 by x
क्या है, -1/x²। ठीक है, सो सेम प्रिंसिपल यू अप्लाई, सो इट इज -1/a²। ये पार्ट हो गया। सो टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ u by v, डिफरेंशिएशन ऑफ u by v क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड कांस्टेंट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट कांस्टेंट बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, दैट यू नो। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड कांस्टेंट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट कांस्टेंट बाय v स्क्वायर। सो सेम प्रिंसिपल यू अप्लाई, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब ये स्क्वायर प्लस 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट कांस्टेंट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या है इधर, d बाई डी एस ऑफ स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। मैं डिटेल लिख रहा हूँ, ये क्लास 12th पार्ट है, ठीक है, अंडर ब्रैकेट। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, लेट मी इरेज। ओके, ये पार्ट को सॉल्व करते देखो, मतलब -12 और ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है, -12 -1/s, ये क्या है, सॉल्व करते देखो, प्लस स्क्वायर प्लस ds/ds तो 1 है, सो आंसर इज स्क्वायर प्लस 4, देन माइनस ये डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर प्लस 4 क्या है, 2s इंटू a क्या है, अरे ये पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या है, 2s इंटू s क्या है, 2s स्क्वायर, सो -2s स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ -12 -1/s -2s स्क्वायर स्क्वायर मतलब माइनस स्क्वायर प्लस 4, आई थिंक नो ब्रैकेट नहीं, माइनस, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर प्लस 4 बाय स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। सो नाउ इफ आई टेक माइनस एज कॉमन, देन माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ इंटू 1/s, इधर क्या होगा, इफ आई टेक माइनस एज कॉमन मतलब प्लस क्या होगा, इफ आई टेक माइनस एज कॉमन हियर, ओके, ये हो जाएगा स्क्वायर -4 बाय स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक इसमें माइनस अगर कॉमन होगा, देन स्क्वायर -4, इफ आई टेक माइनस एज कॉमन देन स्क्वायर -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा, ओके। सो that is your what, Laplace of t into cos square t, which is called fs, ठीक है। but we'll find out Laplace of integration from t0 to t of t into cos square t dt, then your final answer क्या होगा, here I'm writing just a minute, okay, here I'm writing, ये जो fs मिला मतलब fs कितना मिला, your answer is fs by s, मतलब जो भी fs मिला डिवाइड करो s, fs क्या मिला, 1/2 होल इंटू 1/s माइनस स्क्वायर -4, ठीक है, स्क्वायर -4 बाय स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। इसमें देखो तुम कैलकुलेट करो, देन s को डिवाइड करो, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सो कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, so here another important question, here we'll find out Laplace of e to the power -3t integration of 0 to t into sin 3t. See, there are three type of function, one is t, second is sin 3t, third is e to the power -3t. so कैसे सॉल्व करते देखो, पहले ये फैक्टर को कंसीडर करो, फर्स्ट इज sin t, so first find out Laplace of sin t, Laplace of sin 3t, Laplace of sin 3t क्या है, 3 बाय स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 9, ठीक है। देन यू फाइंड आउट Laplace of t into
sin 3t. So by using effect of multiplication by t theorem of Laplace transformation, so since t is multiplied to this function, then your answer is minus d by ds, negative differentiation of this function. Yes or no? Yeah, तो clear. So let us find this answer. So minus 3 मतलब d by ds of 1 by square plus 9. So ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 d by ds of this one is what, 1 minus of 1, ये आंसर इनटू इस अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, 2s का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s, तो ये मतलब आपका फाइनल आंसर हो गया. 3 into 2 is 6, so 6s by स्क्वायर प्लस 9. ये क्या हो गया, लैप्लेस ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, लैप्लेस ऑफ दिस फंक्शन. यहाँ तक क्लियर. Then we'll take Laplace of this part. मतलब I'm writing here. So Laplace of integration from 0 to t into sin 3t into dt. इसका इंटीग्रेशन लैप्लेस क्या होगा, ये आपका एफ एस है, मतलब आंसर क्या होगा 1 बाई एस इंटू एफ एस एज पर द थ्योरम, राइट. सो एफ, ये आपका एफ एस है. सो आंसर क्या होगा 6s बाय स्क्वायर प्लस 9 into what, 1 by s, so s is cancel, your answer is 6 by s square plus 9. I think ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ये स्क्वायर है. सो ये स्क्वायर मतलब आंसर इज 6 बाय स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया आपका लैप्लेस ऑफ दिस पार्ट. ये पार्ट का पूरा हो गया. बट आवर क्वेश्चन इज व्हाट, विल फाइंड आउट लैप्लेस ऑफ e to the power minus 3t into this. So here you apply fast shifting theorem. As per the fast shifting theorem, if e to the power 80 is multiplied to a function, then क्या रिप्लेस करना है, s minus a रिप्लेस करना है. So मतलब इधर आपका फाइनल आंसर क्या है, if I take Laplace of this part, मतलब Laplace of e to the power minus 3t integration from 0 to t into sin 3t into dt, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी आपका मिलेगा, ये एफ एस मिल रहा है, मतलब ये तो आपका फाइनल आंसर मिल रहा है, मतलब लैप्लेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट. इफ यू मल्टीप्लाई e to the power 80 to that function as per the fast shifting theorem, just replace करना है s minus a. So a is here minus 3, so your answer is 6 by s plus 3, s minus of minus 3 ना, so it will be s plus 3 whole square plus 9 होल स्क्वायर. सो ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, so with this I am ending this lecture. I hope you understood what I have explained today. So thank you so much for watching my video. All the best. Thank you.